जे तू ना फड़दा। Jai Guruji, everyone. Thank you so much, Seema Aunty. Clearly, there is something because of which I'm here today doing this satsang. Guruji की मेहर है. कल मैं और सीमा आंटी मिले और मैं कहीं और सत्संग किया एंड में सीमा आंटी ने कहा कि सब कुछ बोल दिया आपने, अपने पेरेंटहुड के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं. मैंने कहा वो तो बहुत बड़ा है, वो तो किसी और दिन. एंड जब हम फिनिश कर रहे थे, she said you must come to the temple one day and share that. I said yeah, sure. Little did I know, and कल ये सीमा आंटी को भी नहीं पता है, एक और संगत came to me and she said I want to listen to your satsang. And I said, yeah, sure. And I had to leave in a rush because my son started crying. And again, Seema Aunty messaged this morning. She's like, can you come today? Oh, I said, I have to organize now because Atresh is not home. So I requested my mom. I said, can you please look after him and let me just quickly go deliver my satsang and come back. So nothing happens coincidence hai. So thank you, Aunty. And I'm sorry I'm carrying my phone because there's lots to be said about my little one. फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी रिक्वेस्टेड कि नई संगत हैं तो नए भी संगत हैं तो मैं बता दूं मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी. मैं एक्चुअली गुरुजी से वे बैक 2005 में जुड़ी थी. जो मुझे पता है, बाकी तो गुरुजी को पता है हम कब से जुड़े हुए हैं. दिस इज March 18th 2005. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज never really a believer in God, let alone God men. My friend took me to Guruji. She mentioned Guruji and mentioned some satsangs, and I said, "Can I please accompany you?" She took me, and सब बड़े अच्छे से हो गया. उनसे मिले, उन्होंने बात भी की, और मैं किसी चीज़ को लेके बहुत कंसर्न थी. मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, एंड गुरुजी लेस देन अ वीक मेरे ड्रीम में आके मुझे बता गए कि पासपोर्ट कहाँ पर है. मतलब मेरे हाथ में लिटरली पहुँचा के गए हैं. सो वो तो एंड उन्होंने तब मुझे उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे पापा जी जैसे हैं. उस ड्रीम में उन्होंने मुझसे कहा, तो वो वही रहे हैं आज तक मेरे लिए. ही इज गॉड, ही इज गुरुजी, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, बट सबसे ऊपर वो हमेशा मेरे पापा जी ही रहेंगे. एंड नाउ जस्ट टेल यू मेरे पापा जी ने कैसे मुझे एक बेबी ब्लेस किया है. So again, just to give a little background, and I don't want to paint this sorry picture of some abla nari who'd been trying for this forever and wasn't being blessed with a child. In fact, for the longest time, I wasn't ready. जब मैं ready तो मेरा husband नहीं ready. जब वो ready तो मैं नहीं. ये चलता रहता था. And ऐसा नहीं होता था कि हम दोनों एक टाइम पे बोले कि हाँ, let's have a child. And somewhere जब कोविड टाइम शुरू हुआ, एंड आई डोंट नो व्हाट डॉन्ड ऑन मी. मेरा कोई कॉलीग भी 10 years पहले जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई है, who suddenly started talking to me about his child, and he's like, if you're planning, he said you may wanna. And I said, why is he he's like, I'm sorry, this is personal, I don't know why I'm reaching out to you, we hadn't spoken in 10 years. And again, I don't know what happened. I just looked at Atresh, and तब 3 महीने already हो चुके थे. This is June 2020. हम सब घर बैठे हुए थे. So we were working from one. Looked at Atresh and I said, if at all we're planning to have a child, can we please think of this time? Because we're both at home, so there won't be a better time. And for the first time, he's like, yeah, I think this is a good time. I'm like, that's it. And I would normally not give away my age. I was a little short of 40 then. So is exactly a month short of 40. And I said, okay, great. So let's not waste time. Let's make the most of work from home situation. So I just called my doctor, and she was actually an IVF person. I said, I need to get this right, and immediately, so that नहीं पता कब तक चल रहा है work from home. Let's just do this. At least जितनी pregnancy निकल जाए इसमें निकल जाए, वरना हम दोनों को बहुत commute करना पड़ता था. So June 2020, I took my first consultation, and उसके बाद September में so I had the first cycle in September 7th, and I'll take you over the relevance of 7 throughout the journey, and that's why I'm mentioning these dates. So September 7th was my transfer, the first cycle. जब वो आपसे, so those who don't know IVF, I'll quickly take you through it. They take, it depends on you if you want to use your own eggs or donor eggs. We were using mine. So वो आपसे एग्स लेते हैं, आपके हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, और वो लैब में एम्ब्रियो बनाते हैं इन दोनों से.
So obviously depend करता है, chances obviously better होते हैं अगर आपसे ज़्यादा eggs मिले उनको and you know quality and everything. September 7, 2020, they retrieved my eggs and there were 7 eggs. So again, September 7th and 7 eggs. And so next day they tell you how many fertilized. मतलब इसमें से कितने बने embryo. September 8th they called me up and they said that none of them fertilized. And you know, see, and I'm sure it wasn't intentional, but the language used was none of the eggs fertilized. And immediately and we're deeply ingrained to believe what women, I'm sure, will relate to it. सबसे पहले हम अपने आप को guilty feel करते हैं कि हमने कुछ किया. And the first thing was, God, I took so much of time to decide. And you know, okay. And I was completely broken. And injections वगैरह से उतना दर्द नहीं होता जितना उसे एक news से होता है that it hasn't worked out. And I said, okay. So, and my doctor was so good, maybe she read my mind or something. She said, you know, it's not the eggs. She said, anything could have gone wrong. She said, we can try once more. And I said, but what are the odds? She's like, see, it's a gazillion things could have gone wrong. Not just the egg or the sperm, the entire process, you know, it's a scientific process. I mean, anything could have gone wrong. She's like, let's give it one more try. I said, okay. So I looked at Atresh. He said, but we can only give it one more try because we only have that much money in the insurance kitty, at least at that point. He said, bas utna hi hai, so we can, and it's very expensive for those who know about it, especially the medicines. So he said, एक ही और का chance है. मैंने कहा, okay, we'll give it our best shot, whatever it is. But he's like, please bear in mind, और एक नहीं हो सकता. I said, ठीक है. And Guruji की मेहर देखिए, जो next cycle था, उसके medicines all the way India से आए. तो हमें 1/3 कॉस्ट पे मिल गया. क्या odds थे, और मेरी फैमिली को भी नहीं पता था हम ये ट्राई कर रहे हैं. मैं किसी को बुरा नहीं फील कराना चाहती थी just in case it didn't work out. So वो 1/3 कॉस्ट पे आ गए medicines मेरे पास. सितंबर में फर्स्ट साइकिल था, नवंबर में दूसरा साइकिल था, नवंबर 29th टू बी एग्जैक्ट. अब मैंने कहा इस बार ज्यादा एग्स हो जाएंगे तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे. अगेन देयर वर 7 eggs. I said okay, and but I told Guruji, I said Guruji, and first में तो मैं super cool थी, मैंने कहा हो ही जाना है, इसमें क्या हुआ है, you know, I was super positive. Second time जरा इंसान reality पे आ गया था, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी मैं आप पे छोड़ रही हूँ, इस बार मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही हूँ. In the sense that I'll give it my best, but आपके हाथ में है जो भी है, just hold my hand through it. If it's meant to me, it's okay, give it to me. नहीं है, but then you need to hold my hand through it. So November 29th, again the retrieved eggs, it was 7 again. मैंने कहा ले, मैंने कहा फिर से 7. मैंने कहा चलो ठीक है, we'll see what happened. November 30th, they said 4 out of the 7 fertilized. And I said, you know, this is me, this is him, we're the same people. The first didn't happen, the second happened, again 7, but 4 fertilized. So no, I'm not damaged goods. I said, Guruji, thanks for validating that. But 4 में से क्या होता है that they take different stages पे ले जाते हैं, testing में करते हैं. Net हमने advanced testing पे डाला. And एक बचा उसमें से, एक survive, like one made it through all the tests, and that is obviously my son at home. And Vikram is sitting here. When I was pregnant, Vikram said, and he said, क्या due date है? मैंने कहा वो ना नवंबर के mid-November से mid-December के भी please be ready, मैं कभी भी phone message आएगा. He said Saji होगा, देख लेना, Saji होना चाहिए. मतलब उससे पहले आ गया तो स्कॉर्पियो होगा. एंड आई नीड टू टेल विक्रम कि वो तो डबल सैजी है. वो एक्चुअली December 9th पैदा हुआ 2021, पर वो वजूद में आया है November 30th, which is his birthday. He doesn't know this. And that was actually Gurpurab in 2020. 2020 पे Gurpurab, if anyone wants to check, it was November 20th. So I keep telling Arsh, I'm like, you are उन्हीं की मेहर right from the start. So again, ये हो गया, and I had always envisioned a boy, not for any चिता को आग देना reason, nothing. I just visualized a boy, and क्योंकि एक ही था और वो boy निकला, तो Atresh just kept looking at me because he wanted a girl. I said देखो अब जो है यही है. And तो नवंबर में भले एम्ब्रियो क्रिएट हो गया, एंड टाइमिंग देखिए हर चीज की. नवंबर में भले एम्ब्रियो क्रिएट हो गया, लेकिन लैब बंद होती है, दिसंबर टाइम हॉलीडेज होते हैं, जैन में हमें बाहर जाना था, फेब में जी हमारे एग्जाम थे, तो वी सेड चलो मार्च में ट्रांसफर करेंगे. नाउ जस्ट लुक एट द ऑड्स. सो
was talking to my doctor. I said, what are the odds? She's like, there's a 70% chance. Once we transfer the embryo into you, 70% chance it's going to attach to your uterus. I said, okay. Again, I told Guruji, I said, jo aapko theek lage. Guess the date they pick again for transfers, 25th March, which is 7 again. उन्होंने दिया, transfer किया, and they said 2 हफ्ते wait करना होता है, and then we do your blood test and everything. They said don't do anything. उसके बीच में it can be a false positive, whatever. Let's be sure. I said all right. So again 7s, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, retrieval तो मैंने बताया, आपको ये भी बताया. April 5th, 2021, my pregnancy test. And उससे पहले भी मैं आपको बता दूँ, मैं इतना वो होती थी कि 25 मार्च के बाद मैं कहीं नहीं गई, किसी ने मुझे बहुत ही कम देखा होगा कहीं पर भी. But if you remember, Aarti's father was here last year and he was not in a good shape. And I was to drop something off at Aarti's and I kept thinking, रास्ते में मैंने कहा मैं तो मंदिर भी नहीं जाती हूँ, मेरे को लंगर भी नहीं मिल जाता कुछ तो सही रहता. April 2nd, I remember it was a Friday, so I had actually gone to drop something off at Aarti's door. I wasn't meeting anyone. I said मैं बाहर छोड़ के मैं निकल जाऊँगी. और and Aunty is very prompt in responding to texts and to calls. She didn't pick up the call. She didn't respond to texts. I thought, Bhagwan na kare, kahin uncle ko hospital to nahi lekar gaye. Maybe they need some help. That's when I rang the doorbell. I didn't leave that. I rang the doorbell. I'm like, and Aunty answered. मैंने कहा सब ठीक है? कहती हाँ. मैंने कहा क्या हुआ? कहती वो तो मैं तो दरबार कर रही थी, मैं तो फोन ही नहीं देखा. मैंने कहा ओके. कहता तू आ गई, अंदर आ जा. नीचे दरबार अभी सजा. You're the first one to see it. मैंने कहा Thank God. मैंने दरबार में मत्था टेका April 2nd, मैं बाहर आई. कहती है एक काम कर, ये लंगर ले जा, मेरे पास तो इतने सारे आए हैं. मुझे 2 लंगर मिले April 2nd को. April 5th they called me up and I cannot forget, they said you're pregnant and I'm like, are you sure? She said the HCG level is 777. That's a very high number. She said you're pregnant for sure. I said thanks. And that happened. And you know, heartbeat, everything you see, everything happens. And one thing in between, my father-in-law actually left us on May 8th last year. And he was suffering from Parkinson's, and वो सुन के गए ये news that we were expecting, and वो बात भी नहीं करते थे. The last thing he said was, my mother-in-law told him that Dadu, she was trying to tell him that we're expecting and he's going to be a grandfather. And the last thing he said was, no, Dada. He picked his name, Dada. And so again, took 7 again. एक test होता है 12 weeks, 14 weeks पे to confirm everything. जो आपको बोलते हैं, right? कि उससे पहले नहीं बताओ किसी को, the chances of miscarriage are high. And that date was June 7th. And उससे पहले Seema Aunty had actually met me एक बार parking में. I didn't reveal it. She's like, are you pregnant? I said, and I just tallowed the whole topic. But the day the results came, it was a Monday. June 7, 2021, whoever wants to check, was a Monday. I came here, Atresh came ऊपर. मैंने कहा सीमा आंटी को नीचे ले आना please. June 7th, I told her, I said, yes, auntie, I am. She's like, I knew it. She's like, I just wasn't saying anything. I said, okay. So all this happened, and there is another test that happens 20 weeks per, the anatomical one. And उसमें वो बताते हैं सब डेवलपमेंट वगैरह ठीक है, तो मैं उस पर भी डरी हुई थी. और वो July 21 को होने वाला था. मुझे July 21 गुरुजी सपने में आए मंदिर में, वो डिफरेंट मंदिर में थे. एंड पर कुछ ये नहीं था, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर हम सब हैप्पी बस बैठे हुए थे सुबह सुबह. सो आई न्यू टेस्ट ठीक रहेगा. एंड ऑब्वियसली एज यू नो टेस्ट बिल्कुल ठीक था. एंड ऑल दैट हैपेंड. एंड उसके बाद अगेन October 25th is 7 again. My mom-in-law was sitting India में, ध्यान में बैठी हुई थी, और वहाँ गुरुजी उनको बोल के गए ध्यान में कि he said your baby is special. And you know, all that happened. There's like so much to say, but Arsh is here. And I don't want to take, I mean, I'm sorry if I'm forgetting anyone, but इतने लोग, and the reason I'm saying all this is if I could do this at 40, again ये कोई मेरे कर्म नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने गिफ्ट में दिया है अर्श को. And अगर
at 40, if I could choose and decide, कि हाँ भाई, then many can, because I know many have approached me after that asking me for my satsang and IVF and other things, and I know these were people even younger than me. So I just want to tell them that if I could, you know, with you have the timeline in front of you. At 40, someone decides. 40, you know, you conceive. At 41, you deliver. And touch wood, everything is fine. Then it's all him, and anything is possible. I just want to say, and I wish, जैसी मेरी रही है pregnancy, Guruji सबको दे. I didn't throw up once, except for when they gave me that वो shot, वो जो COVID वाला होता है, उसकी वजह से. Not because of Arsh. आप संगत ले लीजिए तो मेरे घर पे लंगर पहुंचता रहा है, एंड सबको पता है मैं दूर हूँ, मेरे घर पे लंगर पहुंचता रहा है. मैं कॉलीग्स बोलूँ तो मेरे को लिटरली 2 महीने लास्ट प्रेगनेंसी के तो मैंने जैसे कुछ काम भी नहीं किया होगा. नेबर्स, आप जानते हैं यहाँ कैसे होते हैं. मैं तो इंडियंस की भी बात नहीं कर रही हूँ, उनको पता चला आई वाज प्रेग्नेंट बिकॉज दे सॉ मी एंड में देयर लाइक व्हाट डू यू वांट, ग्रोसरीज फूड विल कम एंड आई हैड नेवर इवन स्पोकन टू देम. फ्रेंड्स, फैमिली जैसे वो खड़े हुए हैं, तेरा पीपल यहाँ बड़े लोग हैं जिनके खुद के 2-2 बच्चे हैं छोटे से, एंड दे टेलिंग मी तेरे को क्या खाना है, हम बना के देते हैं, तेरे को क्या, लाइक यू नो, इट्स द काइंड ऑफ लव दैट हैज बीन शावर्ड बाय हिम ऑन मी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई वुड रियली विश कि सब, अगर प्रेगनेंसी है तो प्लीज सबको ऐसी दीजिए, क्योंकि मैं डरती थी कि कोई फैमिली से नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने देयर वर टाइम्स आई हैड टू टेल माय सेल्फ आई एम प्रेग्नेंट. सो एंड लास्ट जब गुरुजी मुझे यहाँ लाए, अगेन सीमा आंटी को पता है, वो बिफोर द प्रेगनेंसी वाज थैंक्सगिविंग डे. अगेन गुरुजी ने कैसे मैनेज किया, मैं क्राउड में नहीं आना चाहती थी, पता नहीं हम यहाँ पास से कैसे गुजर रहे थे, कहीं और नहीं गए. मैंने कहा अभी तो कोई होगा भी नहीं मंदिर में, हम क्विकली मत्था टेक लेते हैं. कोई नहीं था, हम थैंक्सगिविंग पे मत्था टेक के गए. आंटी मेरे लिए ब्रेसलेट लाई अर्श के लिए. वो कहती हैं ये, हम सोच ही रहे हैं घर में कि कौन सा रखें अर्श के लिए. उन्होंने मुझे 2 दिए, कहते हैं ये वाइट वाला रखना, ये बड़े मंदिर से आया है, खास अंदर भवन से. मैं क्या बोलूं अर्श के लिए, उसको कितना मैंने नहीं दिया होगा किसी बच्चे को इतना प्यार. आई कैन टेल यू बिकॉज आई एम नॉट द मैटरनल काइंड्स, बट जो अर्श को मिल रहा है फ्रॉम एवरीवन एंड फ्रॉम गुरुजी is beyond my comprehension and anyone else's. Just to sum it up, अभी वो घर पर था, ये सब suddenly decide हुआ, वो I was leaving and he started giving me the most dazzling smile. I said, Mama doesn't want to leave you and go right now, but Mama needs to go because, you know, you came to me, so I found my baby. I don't know who needs this satsang to find their baby and all this joy that you've given me. So it is for those, I don't know whoever they are at this, and whoever needs to know this. So on that note, Jai Guruji, and thanks for all the love and support everyone has given. Everyone. I don't want to take